So today we'll start from magma diversity. So, so magma was generated by melting of molten material or lithospheric plate. So suppose this is for a surface. So magma will form at a depth here. Then it will rise to the surface gradually because it has low density. So when it is rising to the surface, its composition can change. Here it is generated, it is called a primary magma. So the primary magma. So gradually say rise to the surface. No? So it can add material from the surrounding or it can separate into different composition. So gradually magma जो composition है कि change हुए but say diversify हुए it can be separated into different composition or it will evolve. So gradually कौन होगा evolve. So it will be primary magma कहवा जिसमें surface आड़ से move करता हो then that is called as evolved magma. So from this primary magma, we can get different types of or different composition of magma. So that is called as a magma diversity, where different composition of magma that form from primary magma. So for this evolution or for the diversification, the three processes responsible. One we can say differentiation. Second one we can say magma mixing. Third one we can say assimilation. So differentiation, magma mixing, assimilation, these are three major processes which diversify the magma. In differentiation, it will differentiate, it will split into two different compositions. Mixing the two types of magma can mix with each other, produce another composition. The assimilation is the other thing, the material is the other add to the magma composition change. So, what elaborately I will discuss करते हैं. So differentiation, what is differentiation? It is defined as any process by which magma is able to diversify and produce magma or rock of different composition. Suppose कि गोटे magma अछि हमें consider करबा कि A और B consist करछन गोटे magma नि magma रे A और B अछि A अछि धर 70% B अछि 30%. तो gradually ये कोन होला crystallize होला. तो crystallize हेले मेल्ट रे composition जहाँ अछि ता gradually change हम suppose कि A 60 हे गला B 40 हे. So this is our new composition and what a different composition than this. So when it will crystallize, it can produce different composition. So that is called as a diversification. A50 B50. So like a differentiation होउची जेति कि तुमरा crystal produce होउची and जेति कि melt होउची. So they all evolved with progressive crystallization. So differentiation जोटे कि which partial melting होची बा crystallization होची it refers to essential process. One, it is a creation of a compositional difference between one or more phases as elements partition themselves in response to the change of in a intensity variable. तार meaning कौन?
केतेक सब्सटेंसेस अछंती जोथि की गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रे दे विल बी मिक्सेबल विथ ईच अदर तापर गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रे से माने सेपरेट भी हिज सो डिफरेंट फेजेस जो क्रिएट हुई that depend upon different temperature condition. Suppose you take the example of dioxide anorthite. It will be dioxide 80 nature, anorthite 20 nature. So it should be at a particular temperature. You got a particular temperature rush. जो कि गोटे फेज रे सी थोड़ा एग्जिस्ट करছে that is होची मेल्ट फेज. Then when the temperature will decrease, at some point it will start crystallizing. This melt will start producing solid. The solid produce will start करूँ. So that की यार composition change है suppose अगर dioxide 70 anorthite 30. So now there two phases are created. One is your melt and some part is your crystal. The two phases are created. Neither phase create है. So the creation of compositional difference between one or more phases. So the data phase create है गोटे 100% solid रहे कि dioxide पाइल other part में dioxide plus melt पाइल. तो जो उधर पाइल कोथ में create है लाटा because of तुम्हारा pressure, temperature और compositional changes. So जब pressure, temperature असला तो change है then should be तुम्हारा data different composition from the initial producer. तो जोटा प्रोड्यूस है इट मे प्रिजर्व जोटा कि प्रिजर्वेशन ऑफ केमिकल डिफरेंस क्रिएटेड बाय सेग्रीगेशन द केमिकली डिस्टिंक्ट पोर्शन बा सिंपल पाया गले सपोज कि ये जो मेल्टा प्रोड्यूस है तो जेटा गोटे प्रोग्रेसिव क्रिस्टलाइजेशन है द्वारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्रिस्टलाइजेशन चली तो डाइऑक्साइड 70 ग्रेजुअली ये कन्वर्ट हो कौन कि डाइऑक्साइड तुम्हें लीजिए 65 अनोथाइड 35 पुणी आउ थे प्रोग्रेस कर सपोज धर कि डाइऑक्साइड 60 अनोथाइड 40 सहित क्रिस्टल प्रोड्यूस कर बट प्रोग्रेसिवली प्रोड्यूस ही चली जो कंपोजिशन पूरा दे कैन नॉट प्रोड्यूस सेपरेट phase or it cannot isolate from this. So it पे कौन हुए इतनी तरह जितनी की crystallize ही थी पर जितनी की melt produce हुई थी समाने तो system को बाहर ही जोड़ तो preservation कौन कि जितनी crystal produce थी सी system रो बाहर जोड़ तो इटा उटे particular new composition है सावर में pipe यदि ये continuously progressively चले तो ताले एक धरो dioxide 70 ची ये with progressive crystallization से 65 का 30 कन्वर्ट हेगला तो ये जो कंपोजिशन टा एठु इवॉल्व होइतला एटा भी प्रिजर्व हला नहीं सैंक्शन कन्वर्ट हेगला या ये जा प्रोड्यूस हेतला ये कन्वर्ट हेगला या तो सो प्रिजर्वेशन पाई जो टाइम से प्रोड्यूस होछ सेटा में से सेपरेट हवा दरकार से सिस्टम पता कोनो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन को आती फ्रैक्शनल मेल्टिंग अंडरस्टूड. So fractionation is the main process which can produce, which can diversify the rock. So fractional crystallization, simple removal of or segregation of crystal from a melt or separation of melt to fractional melting point. So it is a removal of early from crystals. हमें bicomponent diagram already discuss कर चुके तो ताको हम कहते fractional crystallization. But how that happens, the different processes जो कि fractional crystallization को different mechanism which is the fractional crystallization way. The three process one gravitative settling, one filter pressing, and one flow separation. So gravitative settling simple कहगले कि जो पूरा denser material obviously at the bottom and lighter material at the top. So here the separation that occurs because of the density difference. जो rock मोर जो क्रिस्टल गुड़ा गोटे पर्टिकुलर जदि डेंसर थांती ताले माग्मा चेम्बर तळु सेटल करछबे जोरा लाइटर थांती ऊपरे फ्लोट करिवो जो रॉक प्रोड्यूस होबो एठी accumulation of these minerals denser mineral ताको accumulates कर तो जेहेतु माने सेपरेट होती बाय थ्रू डेंसिटी से माने लेयरिंग भी शो करिवो क्या जोरा heavier to तळा नेबो जो लाइटर तो ता ऊपर रे से अनुसार दे विल प्रोड्यूस a layering of
having contrasting density. So it is a simple process where separation occurs because of gravity. Then another process is filter pressing. So this type of separation that occur because of tectonic activity, or you can say because of compression. ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଧର ଓଦା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ପ୍ରେସରାଇଜ କରିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପେ ଆପେ ୱାଟର ବାହାରିଯିବ। ସେଭଳିଆ ଯଦି ଭାବ ଯେ ଏଠି କି ମାଗମା ଅଛି, ମାଗମା ଚାମ୍ବର ଅଛି, ତା ଦେହରେ କିଛି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଇଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତା ସହିତ ତାର ସମ୍ ମେଲ୍ଟ, ତ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମରେ ତାକୁ ପ୍ରେସରାଇଜ କଲି ତାହେଲେ ମେଲ୍ଟଟା ଇଜିଲି ବାହାରିଯିବ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ସେ ଜାଗାରେ ଆକୁମୁଲେଟ୍ କରିଯିବ ହେଲା। ତ ପ୍ରେସରାଇଜ କଲା ମାନେ ମେଲ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ଲେସ୍ ପ୍ରେସର ରୁମକୁ ମୁଭ୍ କରିବାକୁ, ତ ଏଇଟା ସ୍କୁଇଜ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ বা ବାହାରିଯିବ, ଯୋଉଟା ମୋର ସଲିଡଟା ରହିଯିବ। ତ ସେଟା ହେଲା ତୁମର କ'ଣ filter pressing. So I have to filter something by applying pressure. So the interstitial liquid is separated from the crystal by pressure. So that's what booty produced by the tectonic force exerted out of magma. ताले जदि it is flowing through a very narrow conduct, ताले crystal वाला pass कर पारे बनी खाली melt रे अधिक pass कर जो crystal टा इटी left out ही। तब हम कोई बात कौन कि इटी pressurize कला बरको फिल्टर हो जाउछि बाय प्रेशर, जो क्रिस्टल गुरा रहि जाउछि तको हम कहते फिल्टर प्रेसिंग। सो फिल्टर प्रेसिंग रे तुमरो मोनोमिनरलिक रॉक प्रोड्यूस मन रखिबा, जे कि another site is an example जोटा प्रोड्यूस होछि बाय फ्रॉम लैबोरेटरी। तपर आउट प्रोसेस जे तुमरो फ्लो सेग्रीगेशन। तो फ्लो सेग्रीगेशन केतेबेले हुए जेतेबेले magma कोनोसी फिशर बा फ्रैक्चर दे की फ्लो करे, इंदर फिशर रहला आ थ्रू दे की magma फ्लो करछ। तो magma flow करो fissure और fracture देगी, so it will be in contact with the wall rock of the fissure or fracture। तो एगला सब wall rock तो मूव करछि, तो magma रो आ wall rock ई पार्ट रे magma और wall rock, तो ई जगह रे से माने कोन magma टा एपटी घसी कि जो, so that it has a कोन it will exert a shearing force on the content of, so content of magma with ए जगह कोन shearing force create है, shearing force create, जोटा नॉर्मली प्रोड्यूस पे जेतरे गोटे magma रे अधिक थोड़ा क्रिस्टल परसेंटेज था सी कंडीशन एटा प्रोड्यूस पे। जदि magma रे लेस क्रिस्टल परसेंट अछि ताले एटा तुमर फ्लो सेग्रीगेशन रे सेपरेशन हि परिबो नै। magma तला ए थ्रू दे पास करछि ताले इट विल एक्सर्ट अ shearing force on the wall, तो ई पार्ट रे लेस वेलोसिटी से मूव करे, कारण से पार्ट कोन कि वॉल रे घसे कि जो माने, तो it will be slower। तासे दादर क्रिस्टल बहुत अधिक रहउछन करूछन, क्रिस्टल अधिक रहउछन, तो magma रो जेते कि फ्लूइड पार्ट अछि सेतले it will try to pass through the larger crystal, बा क्रिस्टल थ्रू रे पास करे चाहिबो ताले ई जगह रे कोन हो या नैरो हिजो, ए रीजन पूरा कोन हिजो नैरो हिजो, एगला सब बड़ बड़ क्रिस्टल ताके मझी रे magma टा फ्लो करछ सब, तो ए जगह रे कोन नैरो है, नैरो है कि it will be pressurized। जगह जल्दी गोटे वाटर फ्लो करछि मोर कि वाइडर रीजन रे एतरे नैरो रीजन को जो से कल प्रेशराइज्ड फ्लो कर, प्रेशराइज्ड फ्लो कले ये कोन करिवो इट विल पुश द ग्रेन, तो जो फेनोक्रिस्टेटिक बा ग्रेन प्रोड्यूस होछिंदी एपटे जतले ये नैरो जगह रे मूव करे चेष्टा करिवो, तो इट विल पुश इट, तो जगह रे कोन करछिंदी पुशिंग इफेक्ट होछिंदी फ्रॉम बोथ साइड, दी साइड, so that this grain will tend to move towards the center, ये सब कौन center आड़ को move करे चेष्टा करिवे from the wall।
तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करूची बिकॉज ऑफ द नैरोअर रीजन दैट इज कॉल्ड एज ग्रेन डिस्पर्सिव प्रेशर तो कहते ग्रेन डिस्पर्सिव प्रेशर जोटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेन साइज जिते बड़ ग्रेन साइज हम से अधिक डिस्पर्सिव प्रेशर अप्लाई करें तो तामाने सेते अधिक सी मूव करिवो टुवर्ड्स द सेंटर तो ई सब प्रोसेस रे मतलब all the crystals they will concentrated at the center of the flow gradually ସେମାନେ center of the flow ରେ concentrated ହେଇଯିବେ so that there is a separation you can distinguish the separation from the crystal and the flow so ତାକୁ କହନ୍ତି flow separation ଯେମିତି crystal ଆଉ melt separate during fluids ଏହାକୁ fluid differentiation କହିବେ so magma actually move କରୁଛି through crystals it is exerting a pressure on the crystal laterally ଗୋଟେ pressure exert କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ dispersive pressure କହୁଛନ୍ତି so dispersive pressure ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କ'ଣ କି grain ଗୁରା they are moving towards the center so that କି grain dispersive pressure is direct to grain size so ଯୋଉଟା larger ସବୁଠାରୁ center ରେ accumulate ହବ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁରା ତାପରେ gradually towards the outer part then comes to volatile transfer. So volatile, obviously they are lighter metal. They can easily separate from the magma or crystal. So तुम्हारा less pressure condition को आसे सब volatile पूरा release हो जाती magma रो तो vapor phase तार lower density था है तो they can easily diffuse सब diffuse है कि आप कौन सी rock रे भी deposit करते deposit है कि तुम्हारा different rock produce कर पाएंगे बा different alteration ने help करो तो जब अल्काइल मेटासोमेटिज्म कंप्लीटली होची वोलेटाइल ट्रांसफर ऊपर डिपेंड करे कि जहाँ भी वोलेटाइल हैला से मूव कले आ कौन से रॉक रे डिपॉजिट कले जोटा कि हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन हो कि अदर मेटासोमेटिज्म रिएक्शन करंती बाय वोलेटाइल ट्रांसफर so simple कहा गले volatiles are easily separate from the magma because they are very low density and they are diffusive so liquid immiscibility is also a important process जो कि liquid will not mix like oil and water so in certain temperature जो magma action जो मतलब mix है suppose is silicate and sulfide at particular temperature they will not mix with each other ये alkali feldspar system जो हमें porphyry texture देखते हैं जो एक solution texture देखिए तुम्हारा अल्बाइट और ऑर्थोक्लेज भीतर so albite orthoclase भीतर तुम्हारा albite orthoclase they are mixable at higher temperature but the lower temperature isମାନେ separate ହେଇଯିବେ ତାକୁ କହନ୍ତି liquid immiscibility so liquid immiscibility obviously it will produce two composition dita composition produce करिवो तो diversify करि परियो magma को these are some examples like we पढिबो खाली this separate हो next one to magma mixing so magma mixing is the process by which two magma meet or mix with each other simple thing होची हमें जदी कि प्योर क्षीर आनिबो पानी आनिबो ताको मिसै देले तो से ना प्योर क्षीर रहबो ना प्योर पानी रहबो ताको मझिया मझी कंपोजिशन पड़ाइछ तो सिमिलर थिंग होची तुम्हें दीटा magma they will mix with each other they will produce an intermediate composition that is called magma mixing ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି कि ड्यूरिंग मोर कन्वर्जन पेज बाउंड्री सो कन्वर्जेंस रे कौन हुए मोर एठी बेसिक मागा प्रोड्यूस हुए तापर एठू जाईकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रे एसिडिक मागा प्रोड्यूस हुए तो बेसिक और बेसिक एसिडिक मिशंती दे विल गिव ए ऑर्गेनिज्म दैट इंटरमीडिएट सो जो दीटा मागमा मिक्स करछंती तर एसिड मिक्स करछि विथ मोर बेसिक मागमा so they will produce a composition in between them either
sometimes it is more acidic, less basic, sometimes it will be more basic, less acidic, or पूरा intermediate composition रहेगा. So जो दिटा mix करछोती के केते amount रे mix करछि से अनुसार से माने intermediate composition गोटे produce करे. तो हम कहते magma mix. तो एग्जांपल जेटा मन रखिबो रायोलाइट रो जो कि बासाल्ट और रायोलाइट मिसले बासाल्ट जो बेसिक रायोलाइट जो एसिडिक से इंटरमीडिएट कंपोजिशन प्रोड्यूस करले दैट इज होची एंडेसाइट. देखिए हमें assimilation process, assimilation which is simply it is the incorporation of the other material from the wall rock. तो जेतले magma कोनोसी fissure or fracture देकी पास करछि तो wall rock रो different material ता सहित ऐड कर. सेटा डिपेंड करे magma रो केते टेम्परेचर अछि एंड wall rock रे जो कंपोजिशन अछि ताकर टेम्परेचर केते अछि कि सी आक भीतर ऐड हे परिबे कि नै कि मेल्ट करबे पूरा कि जेनोलिथ हिसाब रे रहि. तो जो मटेरियल ऐड होती magma रे केते का पूरा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जानती बा मेल्ट हो जानती magma रे. तो देखो अनडाइजेस्टेड एक रहता है कोते हमें जेनोलिथ. सो जेनोलिथ तुम्हारा कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल विद इन ए रॉक यदि क्रिस्टलाइज ताको जेनोक्रिस्ट बा. सो एसिमिलेशन कि भीतर कि magma रे कौन सी कंस्टिट्यूएंट अदर कंस्टिट्यूएंट ऐड हुए. तो assimilation सब बड़े it cannot change the composition of magma. ଯଦି ମୋର assimilation continuously ଚାଲିଛି ତ ଗୋଟେ point of time ରେ it can change the composition of the magma, it can diversify, but it is not always कि assimilation diversification रे help करे. But material जहाँ add हुए from the wall of the magma chamber हो wall of the fissure हो ताको मैं assimilation कहते. केते डिग्री तुम असिमुलेट करिवो सेटा डिपेंड करे कोन हीट अवेलेबल केते हीट अवेलेबल अछि. जदि magma की टेम्परेचर बहुत अधिक अछि वाल रॉक रो कम अछि ताल से अनुसार असिमुलेट से अधिक करिवो.